आज हम बनाएंगे क्रिस्पी फिश जिंगर बर्गर। वन टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें। और फिश को मैरिनेट करके 30 मिनट के लिए रख दें। अब हम स्वीट चिली सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए 1 कप मायोनीज, 2 टेबलस्पून केचप, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून दरा मिर्च, 1 टेबलस्पून शहद, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी स्वीट चिली सॉस तैयार है। अब हम डीपिंग मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए एक बाउल में 1 कप मैदा लेंगे, 1/2 कप कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, और 1 कप पानी डालकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। और 20 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। ड्राई मिक्सचर तैयार करेंगे। 2 कप मैदा, 1/2 कप कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून दरा मिर्च। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
हम मैरिनेट की हुई फ़िश को पहले ड्राई मिक्सचर में लगाएंगे, फिर डिपिंग मिक्सचर में और दोबारा ड्राई मिक्सचर में लगाएंगे। अब हम फिश को फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर आ जाए तो उतार लें। ये हमारा क्रिस्पी फिश जिंगर बर्गर तैयार है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।